प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पॉजिटिव इंटीजर पावर n को सॉल्व करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम की नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन पावर n को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करना सीखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। अगर इंडेक्स n एक नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में हो, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर -1, -2, 1/2, -3/2 की तरह हो और x रियल नंबर हो सच दैट mod of x लेस देन 1 हो, तो 1 + x to the n इक्वल टू 1 + n into x plus n into n-1/2 factorial into x to the power 2 plus n into n-1 into n-2/3 factorial into x to the power 3 plus continue this process plus n into n-1 into n-2 up to n-r plus 1 over r factorial into x to the power r plus so on। मतलब अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन की पावर में हो तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं और इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको हम बाइनोमियल सीरीज कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जांपल 1 इज expand 1 minus 2x to the 1/3 to 4 terms and apply it to evaluate 0.8 to the 1/3 correct to 3 places of decimal। इस एग्जाम्पल में दो पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 minus 2x to the 1/3 को 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है और सेकंड पार्ट में हमने इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए 0.8 to the 1/3 को एवेल्युएट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होती है? अगर mod of x लेस देन 1 हो। So here mod of 2x is less than 1 which implies that 2 into mod of x less than 1। यूँ mod of x less than 1/2 है। So the expression is valid only if mod of x less than 1/2। That is 1 minus 2x to the 1/3 को अब हम 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करेंगे। So इसके लिए we will use this formula। And here x equal to -2x and n equal to 1/3। Substituting these values from here, we will get this 1 plus 1/3 into -2x plus 1/3 into 1/3 minus 1 over 2 factorial into -2x to the 2 plus 1/3 into 1/3 minus 1 into 1/3 minus 2 over 3 factorial into -2x to the 3 minus so on। Simplify this bracket, we will get this 1 minus 2/3 into x plus 1/3 into -2/3 over 2 into 1 into 4x to the 2 plus 1/3 into -2/3 into -5/3 over 3 into 2 into 1 into -8x to the 3 minus and so on। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 minus 2/3 into x minus 1/2 over 3 into 3 into 1/2 into 1 into 4x to the 2 minus 1 into 2 into 5 over 3 into 3 into 3 into 1/3 into 2 into 1 into 8x to the power 3 minus and so on। Cancel the like terms, we will get this 1 minus 2/3 into x minus 4/9 into x to the 2 minus 40/81 into x to the 3 minus and so on, which is the required answer। सेकेंड पार्ट में हमने इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए 0.8 to the 1/3 को एवेल्युएट करना है। So इसके लिए we put x equal to 0.1 in the above expression, we will have this 1 minus 2 into 0.1 to the 1/3 equal to 1 minus 2/3 into 0.1 minus 4/9 into 0.1 to the 2 minus 40/81 into 0.1 to the 3 minus and so on। Simplify these, we will get this 1 minus 0.2 to the 1/3 equal to 1 minus 2/3 0.1 minus 4/9 into 0.01 minus 40/81 into 0.001 and so on, which is equal to 0.8 to the 1/3 equal to 1 minus 0.2/3 minus 0.04/9 minus 0.04/81। Divide these terms, we will get this। Now subtract these terms, we will get this, which is equal to this 0.92841। यूँ 0.8 to the 1/3 equal to 0.928 है, which is the required answer। Example 2 is
expand 8 minus 5x to the minus 2 over 3 to 4 terms. अब इस एक्सप्रेशन में 8 की जगह 1 लाने के लिए we take 8 common from here, so we will get this 8 into 1 minus 5 into x over 8 to the minus 2 over 3 which is equal to this. अब इस 8 को हम 2 to the 3 में करके लिख देंगे, so we get this. Cancel 3, we have this which is equal to this 1 over 2 to the 2 into 1 minus 5 into x over 8 to the minus 2 over 3 which is equal to 1 over 4 into 1 minus 5 into x over 8 to the minus 2 over 3. अब ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होगी? अगर mod 5 into x over 8 less than 1 हो, which implies that 5 over 8 into mod of x less than 1. u mod of x less than 8 over 5 है, that is 1 over 4 into 1 minus 5 into x over 8 to the minus 2 over 3. अब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए we will use this formula and here x equal to minus 5 into x over 8 and n equal to minus 2 over 3. Substituting these values in this formula, so we will get this. Cancel 2 and 8 and simplify these terms, we will get this. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Cancel the like terms and simplify these, we will get this which is equal to this. Multiply 1 over 4 from here, we will get this. After solving this, we will get this, which is the required answer. Example 3 is evaluate cube root of 30, correct to 3 places of decimal. Cube root of 30 equal to this 30 to the 1 over 3. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 27 plus 3 to the 1 over 3. अब 27 की जगह 1 लाने के लिए we take common 27 from here, we get this 27 into 1 plus 3 over 27 to the 1 over 3. Cancel this term, we get this 27 to the 1 over 3 into 1 plus 1 over 9 to the 1 over 3. अब 27 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, so we will have this. Cancel 3, we get this. To solve this, we will use this formula. So here x equal to 1 over 9 and n equal to 1 over 3. Substituting these values from here, we will get this. Simplify these terms, we will have this. अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. Cancel like terms, we will get this. Multiply these terms, we have this, which is equal to this. Divide these terms, we have this. Subtract this term, we will get this. u cube root of 30 equal to 3.107 है, which is the required answer.